Hello everyone, this is your host Zawar Ahmed and all are watching this video right now. I welcome you in another session of Out of the Box with APK. आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है डिसिप्लिन्ड अजाइल के ऊपर। इससे पहले कि हम आज के बकायदा टॉपिक और पहले क्वेश्चन की तरफ चलें, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट एक्चुअली डिसिप्लिन्ड अजाइल इज। वेल, ट्रेडिशनल अजाइल स्क्रम से एक कदम आगे जाते हुए डिसिप्लिन्ड अजाइल हमें एक हाइब्रिड और लर्निंग बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, जो कि हम ट्रेडिशनल अजाइल स्क्रम के जो प्रोसेस गैप्स होते हैं उसको फिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बाद औक़ात एक प्रोसेस टूल किट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और प्रोसीजर्स का एक कम्बिनेशन होता है जिनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक और सिचुएशन के मुताबिक चूज़ करके अपने प्रोसेस को टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते रहते हैं। डिसिप्लिन अजाइल के ऊपर एक लाइव वेबिनार हुआ था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जोशा बर्न्स विद पॉल सेम्स एंड रॉड ब्रेन। उसके अंदर अहमद बिलाल खालिद ने एक क्वेश्चन पूछा था, वाज रिलेटेड टू द टॉपिक, सो वी डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू गाइस। क्वेश्चन ये था कि जब हमने एजाइल स्क्रम को अडॉप्ट करना शुरू किया तो हम चाहते थे कि हम अपना डिलीवरी गोल इन टाइम अचीव करें और अच्छा काम करें। लेकिन हम जैसे जैसे इस प्रोसेस के अंदर आगे गए तो हम डिफरेंट मीटिंग फ्रेमवर्क प्रोसीजर्स के अंदर फंस गए और जो हमारा एंड प्रोडक्ट के ऊपर फोकस था वो हट गया। इस चीज़ को हम डिसिप्लिन्ड अजाइल में कैसे ओवरकम करेंगे? हम अपने एक्चुअल जो आउटकम है उसके ऊपर फोकस में, बजाय इसके के प्रोसीजर्स के अंदर स्टक हो जाए। और लेट्स सी हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। It's about outcomes, right? Exactly. That's and the whole point of Discipline Agile, in a large part for me is we're choosing our instance of our way of working, and that's always going to be hopefully changing to some degree. So getting stuck by just saying yes, there's these handful of practices we've selected, and we're doing those practices, whether they're the right ones or the most valuable ones, that's not the point. Right. Keeping your commitment. We want the team to focus on meeting its commitments. And a team is overcommitting, then they have to recognize they don't have that capacity, and perhaps they need to scale back, and they need to get good at delivering less before they start ramping up to deliver more. Yes. The goal is to accomplish what the company wants, which is high value delivered frequently and early, right? I mean, and Agile promises to do that. Now, so when you ask the question, what does good look like? You know, it's not, well, are our stand-up meetings held to 15 minutes? You know, it's not things like that. Though there's this sense, just as there was in traditional ways, that if we do all the different components exactly right, well, then the end result will be good. But it's more complicated than that. You know, it's the whole is greater than the sum of the parts. And so in that way, just because you do a good job on some of your iteration planning, you do a good job on this, you do a good job of that, does not necessarily translate into what good could really be. You know, and so we see, I'm sure Paul has seen this, we've both seen, we've all three of us seen a wide range of results. You know, those companies that seem to get very little, you know, they're pretty happy if they get 5-10% improvement in terms of time to market or something like that. And then we see other companies, perhaps we've been directly involved with them, or we've read about them, or we've heard about them from colleagues who achieve hundreds of percent improvement in terms of how they're delivering value and the improvement in customer satisfaction. So the first thing I would always say when we're talking about what does good look like is to take our eyes necessarily off of the individual practices, what we're doing, and instead try to get some larger sense of, are we delivering value, real value, quickly and regularly? You know, and when you start to hear, you know, as Paul and I did a course here the other day, and someone was telling us about how they're doing Agile, and they're feeling pretty good about all the different things they're doing, but they can't figure out why they can't get to doing releases more frequently than every 13 weeks. Well, it is delivery which always matter. हमेशा ये मैटर करता है कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या है और आप डिलीवर क्या करना चाह रहे हो। डजंट मैटर कि आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उसको डिलीवर करने के लिए। और टीम को अपने डिलीवरी गोल्स को देखते हुए अपनी कमिटमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, और अगर उनको ये लगता है कि वो अपने डिलीवरी गोल्स को मीट नहीं कर पा रहे और ओवर कमिटेड हो रहे हैं, तो उनको अपने प्रोसीजर की तरफ देखना चाहिए
आया वो राइट ट्रैक के ऊपर है, राइट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि एजाइल स्क्रम एक ऐसी चीज़ है जो हर सिचुएशन में हर जगह के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। और इस चीज़ का सलूशन हमें डिसिप्लिन एजाइल की सूरत में मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोसीजर्स और प्रोसेस फ्रेमवर्क का एक कम्बिनेशन होता है जिसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें ये एक तरह से फ्रीडम प्रोवाइड करता है और हमारे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है, जिससे हमें अपने डिलीवरी गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो वाज अप्रूव्ड बाय जोशुआ बर्न्स फॉर विच वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।